Can you hear me? Madam, present up now. Okay, thank you. Okay, 2 minutes to go for lecture. 11:15 का है ना मैडम? Okay, dear friends, in our yesterday's lecture, we have studied one concept of solving the problems of admission of partner. वहां पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था. कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Now, today I'm going to modify that particular question. और वो जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे. बट थोड़ा सा उसमें चेंज इंप्लीमेंट करना है. that the book values are not changed. तो ऐसा करने पे कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को, that we are going to learn today. In that case, we are required to prepare the concept, the aspect called as memorandum trading account. कल मैंने उसमें आपको 6th एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करवाया था, इफ यू रिमेम्बर. आई थिंक 5th एडजस्टमेंट तक का ही पार्ट हमने किया था, राइट? Today we would discuss the new adjustment, adjustment number 6. What does that adjustment say? That the value of assets and liabilities, the value of assets and liabilities should not be altered other than cash. बाकी कोई भी assets and liability का value alter नहीं होगा. So in that case, we are required to prepare memorandum trading account. अभी ये जो memorandum trading account हम लोग बनाते हैं, वो concept थोड़ा सा अलग है. उसके अंदर
memorandum revaluation account. Let me just prepare up the formats for you. वापस से उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा बट विथ अ न्यू मेथड. Okay. So in the books of firm अभी हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. अभी इसके अंदर क्या रहेगा, यू नो, देयर वुड बी टू पार्ट. फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में डाल देंगे. विल गो अहेड. सबसे पहले दिया है कैश, तो वो कैश जाएगा कैश अकाउंट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000. कौन है? करो बात, बोलो लेक्चर पे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000. डेटर्स यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही जाने देने का 10,000. स्टॉक 12,000. फर्नीचर 5,000. बिल्डिंग्स 25,000. बिल्स रिसीवेबल 1,000. सी, ये आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर ये अभी हम लोगों ने डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड. कैश को छोड़ के हम कुछ भी अल्टर नहीं करेंगे. Just check, is it now visible? Is it now visible? Okay, fine. तो हमने ये सब ओल्ड बैलेंस शीट में से न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स ट्रांसफर किए. डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, they will be directly taken up to the outer column. Bills payable directly to the outer column. Creditors directly to the outer column. And capital account will go to capital account by balance brought down. A 20,000, B 15,000, C 10,000, D 0.
So we have completed the first step. Second step, distribute accumulated profit, not there. Third step, distribute accumulated losses, not there. Next step, deal with the adjustment. They agree to take D into partnership and give him 1/4 share. So इसपे से हमको न्यू रेशियो पता चलता है 1:1, 1:2, 1:1. D should bring in ₹6,000 for Goodwill. तो उसने Goodwill का कैश लाया, तो जर्नल एंट्री रहेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू Goodwill अकाउंट 6,000. दूसरा इफेक्ट Goodwill में जाएगा, फिर Goodwill डिस्ट्रीब्यूट होगा इमीडिएटली. Goodwill डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट तो इधर आ जाएगा बाय Goodwill account. It would be in the sacrifice ratio as the new ratio is not given. Sacrifice ratio is equal to old ratio. Is that okay? Now, ₹10,000 as capital. कॉन्टेक्ट नंबर दिया था रिगार्डिंग अकाउंटिंग के लिए. मैं ठीक है 11 बड़े तक तो आपने एक बार कॉन्टेक्ट कर लिया. To D's capital account. उसने 10,000 कैपिटल का लाया एंड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट A0, B0, C0, D 10,000. फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 पे जाते हैं, 2 पे. Half of the goodwill was withdrawn by old partner. Goodwill withdrawn. Capital account debited to cash account 1,000, 1,000, 1,000. Half is withdrawn. 2,000 मिला था तो half withdraw किया. And cash के credit side by capital account A, B, C. Okay. The stock and furniture to be depreciated by 10%. तो एसेट का वैल्यू कम हुआ, यहां पे बताएंगे नहीं, याद रखो इसको, यहां पे हम नहीं बताएंगे. मगर इस पे एसेट का वैल्यू कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट. इसका 2 पार्ट रहेगा, ऐसे पे चलेंगे हम. तो अपर पार्ट में ये फर्स्ट इफेक्ट देंगे हम टू स्टॉक अकाउंट 10%. तो 12,000 का 10% 1,200. और दूसरे पार्ट में अपोजिट साइड में आप लिख दोगे वापस से बाय स्टॉक अकाउंट 1,200. दोनों इफेक्ट इधर ही रहेगा, मेमोरेंडम अकाउंट के अंदर ही दोनों इफेक्ट रहेगा. इज दैट ओके? एक फर्स्ट पार्ट में डेबिट साइड में और दूसरा सेकेंड पार्ट में अपोजिट साइड में रहेगा. वैसे ही फर्नीचर का भी टू फर्नीचर अकाउंट
5,000 का 10% 500 और दूसरे पार्ट में अपोजिट साइड में बाय फर्नीचर अकाउंट 500। समझा? कोई डाउट? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। नेक्स्ट, a liability of rupees 1,300 to be created. लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब अपने लिए लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर बिल 1,300 और अपोजिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बिल 1,300। बिल्डिंग वैल्यूड एट 40,000, तो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000 और अपोजिट साइड में टू बिल्डिंग अकाउंट 15,000। इज दैट ओके? अभी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, तो वी नीड टू क्लोज द अकाउंट। तो पहले हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट क्लोज करेंगे। देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है वहां पे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B, C। तो 15,000 माइनस 3,000, ये हो गया 12,000, मतलब तीनों को 4,000 ईच। कोई डाउट? ये यहाँ पे डेबिट में है, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 4,000 4,000 4,000 0। अभी हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा पार्ट क्लोज करेंगे। उसमें कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का। $15,000 minus 3,000, that is 12,000।
इसका इफेक्ट जो है वो भी जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी। ये मेमोरेंडम में हम चारों पार्टनर को देंगे एंड द रेशियो इज इक्वल। सो अभी 3000 ईच, मेरे पास लिखने का जगह नहीं है यहाँ पे, आप लोग लिखना 3000 ईच। कैपिटल के डेबिट में टू memorandum revaluation 3000 3000 3000 3000। Are you getting that concept? अभी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। टू बैलेंस carried down और ये कैपिटल बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी। ए का 22,000, बी का 17,000, सी का 12,000, डी का 7,000, and we take the total to the outer column. ओके, अभी कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,000 और वो कैश बैलेंस हम एसेट साइड में लिख देंगे। $14,000 and you check the total of balance sheet. It tallies at 67,000. Is that okay with all of you? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा सबको? जवाब भी नहीं दे रहे कुछ। बढ़ाने पे चले और मैं कम करने पे चले। तो हैंग हो गया मतलब अभी वो ऐसा वर्ड होता ना तो काम कर रहा था तो हैंग हो गया तो वहां सर्वर का कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा।
अभी मैं वापस उस पर क्लिक करता हूँ वो देखो अभी वो दिखता है तो लिख कर आवाज जा रहा है Now, पहले पूछ लो ना, काउंटर पे पूछ लो ना उसको, चलना कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। गोपाल एंड गोविंद are partners. Sharing profits and losses in the ratio of 60:40. That is, in fact, I can say it is 3:2. The firm's balance sheet as on 31st March 2016 is as follows. Capital, Gopal and Govind, long-term loan, current liabilities. Fixed assets, investments, current assets, loans and advances. Due to financial difficulties, they decided to admit Guru as a partner in the firm from 1st April 2016 on the following term. Guru would be paid 40% of the profit. That is, the new ratio is 4/10. That is 2/5. Is that okay? New partner share. Guru will bring in cash rupees 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts. The profits of the previous 3 years were as follows. Profit for the year ended 31st March 2014, rupees 20,000 includes insurance claim received of rupees 40,000. For the year ended 31st March 15, loss 80,000 includes voluntary compensation paid 1,10,000. For the year ended 31st March 2016, profit of rupees 1,05,000 includes profit rupees 25,000 from the sale of asset. So we will be solving this problem. The new profit sharing ratio between them would be 35:25:40. Past journal entries. हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ पे ऐसे बोला नहीं है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप लोग सेम वैल्यू पे बताओगे, तो
हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम अकाउंट नहीं बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. दैट इज द क्लियर इंडिकेशन दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. क्योंकि यहाँ पे हमको सेम वैल्यू पे कंटिन्यू करो ऐसा बोला नहीं है. मेमोरेंडम अकाउंट कब बनाने का सर? तो मेमोरेंडम अकाउंट हम तब बनाएंगे जब हम वैल्यू सेम रखने वाले हैं. यहाँ पे वैल्यू सेम रखो ऐसे बोला नहीं है. तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. So in the books of firm, revaluation account